अपने फेसबुक पेज पे फेसबुक अकाउंट पे एक पेज बनाया हुआ। आई हैव माई फेसबुक अकाउंट एंड आई मेक इट टू फेसबुक पेज and one is my page in my this account and one is my page from other account, but I make myself admin from this account to the other one, so I can see both of my page here in my this account and I can manage both of my page from here. दोनों पेज में यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। वजह क्योंकि मैंने एक अकाउंट पे दूसरे अकाउंट का पेज पे भी अपने आप को एडमिन बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं दोनों पेज को यहाँ पे बहुत ईज़िली बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने मैं थोड़ा सेटिंग बताने वाला हूँ। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू सेटिंग इन द फेसबुक पेज। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से और ओपन कर लेते हैं मेरा एक पेज रॉयल सुल्तान 05, ठीक है। ओपन कर लिया और स्टार्ट यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है विजिट ग्रुप, ठीक है। हाउ टू विजिट ग्रुप, आई मे क्रिएट द बटन्स इन माई पेज। सो हाउ टू डू क्रिएट दिस बटन आई विल शो यू। इट्स रियली इजी, इट्स नॉट हार्ड। किस तरह ये बटन आपको मतलब ये बटन आप कैसे बना सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वो दिखा देता हूँ। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट दिस बटन एंड हाउ टू रिमूव इफ़ यू पुट योर व्हाट्सएप और मे बी मैसेंजर हियर इन दिस वन वेयर यू सी द विजिट ग्रुप, so you can remove and you can create this one. I will show you right now. Okay, let's go. I click this one and see this is my group Abu Dhabi Online Marketing. So you can see this is the changings, and after you can see the delete button, delete these buttons, the options, and view the inside. So what I will do, delete. It's really easy to explain you in the easy way. Why? See, create action button. So मतलब आप यहाँ पे बटन बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, विजिट ग्रुप वही चूज़ कर ले। आई मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो विजिट ग्रुप पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट कर दिया। सो आई क्रिएट, सी यू कैन सी माई बटन ऑलरेडी क्रिएट एंड आई हैव दिस बटन, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट एंड सिंपल स्टेप. And so we have to I will explain to you more about the groups settings, how to do setting. Okay, what we need to do, edit the page. When you edit the page, you see the first option, standard, okay. Currently number is standard and you see there have the other options. So many, page hider, page information, buttons, tools, shop, setting. So what we do, we need to click in the standard, okay. If my page is standard, so I need to go to change my page video page, ठीक है। मैं क्या करने लगा, मतलब मैं अपने पेज को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँ, मैं यहाँ पे वीडियो पेज लास्ट ऑप्शन जो है वीडियो पेज उस पे आया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ठीक है नीचे गया फोटो, ये देख अप्लाई टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया, सेव के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, देखो ये क्या आ गया। So I click that one, the last one option. So how to do, then has temporarily has been applied. So up here it's you can see that has been updated ticket. It's all it's you can see in the screen, okay. Structures, so it will be changed my group right now, and the sorry, my page setting it's changed right now. So I have follow option, see you can see that one, it's changed. And my groups, you can see the people how they see my groups, and I change everything from there. So as well the people can see my group, it's that like that. I need to go back and I change the same settings. So I need to do edit and I go to back because I want to standard my account in the standard settings. I will do again the same things, okay. सेम जो किया था पहले वही कर रहा हूँ, लेकिन क्या था, एक स्टैंडर्ड है एक वीडियो पेज से। तो मैं तो दूसरे को सजेस्ट करूँगा वीडियो पेज पे, लेकिन मैंने अपने पेज को क्या करना यहाँ पे स्टैंडर्ड पे लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने जो पेज बनाया हुआ है जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसी तरह के
तो ये इसका सिंपल दो सेटिंग, जो मेन सेटिंग ये करना चाहिए वो यही है। ठीक है, मैं ये वीडियो फेसबुक पे भी लोड करूँगा और ये वीडियो मेन जो मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नहीं हो तो मेरे यूट्यूब पे आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी वीडियो, ये तो पेज के बारे में था, ग्रुप के बारे में भी और सेटिंग के बारे में भी ऐसे और वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो थोड़ा और भी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ वेब पेज का, तो वो भी बेस्ट रहेगा। देखो ये है मेन सेटिंग, जो ग्रुप का मेन सेटिंग होता है जर्नल। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं पूरा सेटिंग थोड़ा धीरे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल द सेटिंग अबाउट द ग्रुप पिन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जो ग्रुप ओनर पिन करो तो आपको जैसे भी आपने आईडी ओपन करोगे ना, जैसे मैंने अपने आईडी ओपन किया था, मेरे आईडी के साथ डेफिनेटली मतलब नीचे ये पहला ग्रुप, पहला जो मेरा पेज है दूसरे नंबर पे शो हो रहा था। वो वजह क्या था कि मैंने पिन करके रखा हुआ है फेवरेट। अगर आपको अपने पेज को फेवरेट बनाना है, ऑन ऑफ, ये पूरा सेटिंग है इसका। ठीक है, तो किस तरह का ये देख, इसको सिर्फ पब्लिक करना है, ऑन करके रखना है। ठीक है, मैंने ऑन करके पेज अपडेट ऑन करके रखना है। ये जो तीन सेटिंग है इंपॉर्टेंट, वो मैंने कर चुका हूँ। पेज रोल्स मतलब ये है आपका मेन पेज रोल्स, जो आपको जो देखिए मैंने पेज के साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आता है ऑफ, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रॉयल सुल्तान मेरा नाम है यहाँ पे। ये मेरा वेबसाइट मतलब यूट्यूब का लिंक करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो यूट्यूब मेरा अब यहाँ से विज़िट कर सकते। पूरा सेटिंग मेरा यहीं पे है, जो कुछ भी है। लेकिन थोड़ा जितना भी था फेसबुक मतलब जो पेज है उसका, पेज का रोल। ठीक है, मैं सिर्फ अकेला एडमिन हूँ, दूसरा कोई भी एडमिन मैंने नहीं रखा हुआ इस पेज पे। लेकिन मेरा जो दूसरा पेज है उस पर मैंने छोटे भाई को एडमिन करके रखा हुआ है। बाकी इम्पोर्टेंट्स नहीं, ये तीन इम्पोर्टेंट्स है, बाकी नॉर्मल है। पेज मैनेज हिस्ट्री ये भी नॉर्मल है, मतलब जो पोस्ट किया, जो चेंज किया, सब कुछ हिस्ट्री इसमें आ जाती है। और यहाँ पे ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस, या मतलब हु people who like this page, who will like your page. So from here you can see, you can all that who is in your page, you can see it all. See, black on black who is. So now I have only the peoples who likes my page, all is here I can see as well. So you can see that the people from here easily, and that is the main important setting in the Facebook, in the page was Facebook page. This is the all importance, and from here we have to end it. And or this already explanation button, already I explained how to do the button already in the main screen. It's easy, you can do from here, you can do from there. And tabs, it's not important, you can do it from there, which is I showed you already. And you can do from here also, it's easy. Shops depend, you have some business you want to do, extend your business, this is for the product, and for the shops for the business, so you can do here. And the website, but this is you have to ads in like advertisement, like in the Google advertisement. ठीक है, तो यही था पूरा इसका सेटिंग, ये हो गया। और इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो वीडियो होगा ये फेसबुक ग्रुप के बारे में, उसके सेटिंग के बारे में। तो वो यहाँ से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और इसका एक रूल्स है, तो मैं थोड़ा पीछे जाके एक मिनट वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट से मतलब आपका टॉप फैन कौन है? मेरा अभी तक कोई नहीं है ऐसा टॉप फैंस, ना रखा हुआ है ना ऑन करके मैंने बंद करके रखा हुआ है। और यहाँ पे पूरा आपका जो इस मतलब ऑफिसर्स पूरा सेटिंग नीचे जो नॉर्मल सेटिंग है, होम्स जो वीडियो अपलोड किए हुए जो कुछ भी है यहाँ से देख सकते हो। ये सबसे इजी है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू वेरी इजली। So just little bit, if you don't know some accents, so you can watch the videos in my YouTubes. I will upload that videos in my YouTubes as well, also in Facebook. You can find my video as Facebook as well. Inshallah, see you in next video. In next video I will explain how to do in the page
in the setting, in the page setting. I will show you also, because the page is two kind of. I have one private page and I have I have one private group and I have one public groups, and I will show you both of setting, how to do the setting in next video in Facebook. And see you in next video. Thank you. Have a great time. Bye bye.